ओके सो आज का जो वीडियो दैट इज स्पेशली फॉर द साइंस पार्ट 2 10th स्टैंडर्ड एंड स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर लेसन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल साइंस पार्ट 2 द फर्स्ट 5 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन आई विल से ऑन द पेज नंबर 3 दैट इज योर एवोल्यूशन पूरा पेज है इसके ऊपर एंड उसके बाद सेकेंड पेज के ऊपर अगर उन लोग को चाहिए तो वो 2-3 मार्क के अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जस्ट लाइक योर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस 2-3 मार्क के लिए एंड देन बाकी के जो टाइप्स है वो अगर पूरा किया तो यस 5 मार्क्स एंड बियॉन्ड हो सकता है लेकिन अगर उन लोग ने कोई 3 पार्ट पूछे तो यस दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स एवोल्यूशन इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन फॉर 5 मार्क इन दिस 5 years एंड सबसे बेस्ट क्वेश्चन एंड ये 10 साल में सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन है तो वो है डार्विन्स थियरी दिस इज रियली अ नाइस डार्विन्स थियरी ये सबसे ज्यादा बार ये लेसन फ्रॉम दिस लेसन इन दिस साइंस पार्ट 2 के पेपर में है एंड दिस वाज फॉर 5 मार्क्स एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल से इज फॉर योर 2-3 मार्क्स जो बचा दैट इज व्हाट वी हैव इज पेज नंबर 8 तो ये टॉपिक आ सकता है फॉर योर 2-3 मार्क्स एंड रिमेनिंग दिस मे बी फॉर 2-3 मार्क्स लेकिन ये क्वेश्चन उतने फेमस नहीं है जस्ट लाइक योर ह्यूमन एवोल्यूशन दिस आर नॉट सम फेमस क्वेश्चन जस्ट लाइक एज कंपेयर टू योर डार्विन सो बात करते हैं योर लेसन नंबर 2 की लेसन नंबर 2 ओके लेट अस सी दिस फ्लो डायग्राम बोर्ड एग्जाम में आया था ये 2 साल में पेज नंबर 15 फ्लो डायग्राम ये लेसन में से पक्का आया था सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से डू द डायग्राम फॉर योर 2-3 मार्क्स एंड द फ्लो डायग्राम दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लेट अस सी सम ऑफ 5 मार्क्स के लिए ओके द माइटोसिस इज समवॉट अ गुड टॉपिक फॉर योर 3 मार्क्स एंड देन लेसन यहाँ पे खत्म होता है 5 मार्क्स के लिए बड़ा एग्जैक्ट 5 मार्क का जो बड़ा क्वेश्चन है जस्ट लाइक योर डार्विन और द एवोल्यूशन उतना बड़ा इसमें नहीं है यस अगेन ब्रेक करके उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं मीन जस्ट लाइक योर दिस पेज नंबर 18 पेज नंबर 19 अगर उन लोग ने पूरा दिया तो यस ये हो सकता है 5 मार्क के लिए एंड लेट अस सी योर लेसन नंबर 3 ओके लेसन नंबर 3 लेट मी सी दिस ओके so one of the famous question is what I will say on the human reproductive system okay this is for 5 mark question this is with a diagram I will say ye diagram karo 3.16 3.17 then what we have is one of the famous question that is page number 26 your parts of the flower so this is what one of the famous question I will say again ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम है in this 5 years अगर ये है तो ये आ सकता है for your 3 मार्क्स बिकॉज ये उतना बड़ा नहीं है बट इसके डायग्राम्स के पैटर्न्स बहुत है तो आई विल से दिस पेज नंबर 28 पेज नंबर 29 पेज नंबर 26 ये 5 एंड 3 मार्क के लिए बेस्ट क्वेश्चन है फॉर दिस फ्रॉम दिस लेसन एंड देन वन न्यू टॉपिक जो ये न्यू पोर्शन में ऐड किया गया विच इज बिन एक्सटेंडेड दैट इज ऑन योर ये ट्विंस से बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है दिस आर समथिंग अ न्यू टॉपिक but the one question is I will say for your diagram this has been okay for diagram I will say page number 31 again a good example for the diagram and also for the 3 mark question and yes बात करते हैं अभी छोटे questions की just like your 2 mark just like your 3 mark so okay so binary fusion multiple fusion something again for your 3 marks जिसके डायग्राम बहुत अच्छे and when you talk about the different parts of the asexual reproduction so I will say इसमें topic number 1 2 3 and 4 and 5 ये 5 एक साथ दिए तो this question is beyond the what I will say 5 marks but अगर उन लोग ने 3 दिए तो भी it's been a nice for your 5 marks so talking about your lesson number 4 लेसन नंबर 4 ये पहला ईवीएस को अटैच था जब साइंस एंड ईवीएस का बुक अलग था इन 10th स्टैंडर्ड मेनी इयर्स अगो एंड व्हेन यू टॉक अबाउट योर लास्ट सिलेबस जो इसके पहले का सिलेबस था उसमें ये टॉपिक बहुत नीचे दिया गया था जब साइंस पार्ट 1 एंड साइंस पार्ट 2 की बुक बस एक ही थी एंड देन योर पेज नंबर 36 लेसन नंबर 4 दिस इज योर लेसन नंबर 4 फर्स्ट पेज पे एक डायग्राम है एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ecosystem this can be asked for your 2-3 marks and again I will say ये lesson में भी flow diagram है so please do this flow diagram ये उन लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं आइदर ब्लैंक थोड़ा भर के एंड दे विल से कंप्लीट द ब्लैंक्स
मीन्स ये सब जो ब्लॉक है. So this can be asked for your 2-3 mark. This is a nice question, and let us see some big question in this. जो कि यस सिम्बॉल्स इंपॉर्टेंट है ये लेसन में. ये बोर्ड एग्जाम में ये 2 साल में ये सिम्बॉल आए थे. उन लोग ने सिम्बॉल पूछा था. एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. And then what we have the small topic just like 2 mark के topics is your genetic diversity and then your species ecosystem diversity. ये 2 mark के लिए आ सकता है. Then again what we have is one diagram जो कि आ सकता है for your 3 marks again. So do this. And again 2 marks के लिए lesson में बहुत है. Just like page number 45 में 1 2 3 4 topics are for your this 2 marks. अगेन आई विल से ये जो सिंबल है इसको हल्के में मत लो. ये उन लोगों ने बोर्ड एग्जाम में पूछा है. जस्ट गो एंड चेक द सेकेंड लास्ट मतलब 2 साल पहले के 3 साल पहले के जो साइंस पार्ट 2 का पेपर है चेक करो. दिस लेसन इज रियली नाइस फॉर द फ्लो डायग्राम एंड ऑल्सो फॉर दिस स्मॉल एनर्जी सिंबल एंड वॉट एवर वी हैव ऑन द पेज नंबर this 43. So do this ये lesson बहुत easy है. And then talking about your lesson number 5. Okay, a green towards the green energy. Okay, this is somewhat a lesson जिसमें 5 mark के question हो सकते हैं and है इसमें. So let us talk about the 5 mark question. First of all ये पूरा I will say ये physics का ही एक part है. Okay, EVS and physics. Okay, so let us see a first biggest question on this. So this is page number 48. Thermal energy based electric power station 5 marks के लिए one of the best question. And diagram ये lesson में बहुत है. I will say do each and every diagram. 5 mark के लिए ये पूछ सकता है. And then what we have ये thermal the okay that's all fine. Then even the nuclear is really a nice 5 mark के लिए a nuclear. What we have is the nuclear power plant is also good. Then when you talk about your this power energy power generation plant based on the energy of the natural gas, yes ये उतना बड़ा नहीं है, is only a 1 page, but still we can say कि ये 3 mark के लिए आ सकता है. Then another bigger question if you want. So this is somewhat a good. This is your पेज नंबर 54. दिस इज समवॉट गुड डायग्राम एंड ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी दे सकते हैं. एंड अगर और एक 5 मार्क क्वेश्चन चाहिए तो आई विल से योर दिस सोलर सेल. दिस इज ऑफ द 2 पेज. तो ये आ सकता है ऑफ योर 5 मार्क्स. सो रिमेनिंग टॉपिक इज यस ये बोर्ड में एक बार पूछा गया था पेज नंबर 59 पेज नंबर 59 से. एंड यस अगेन ये लेसन ना बस 5 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए बट 1 मार्क के लिए MCQ इसमें बहुत से पूछे गए थे. जस्ट लाइक उन लोग ने एक बार बोर्ड में पूछा था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, थर्मल या योर हाइड्रो या योर न्यूक्लियर. एंड इवन द परसेंटेज भी बहुत बार उन लोग पूछते. सो आई विल से लेसन नंबर 5 प्लीज डू योर diagrams well. And yes abhi I think so I will make one more video for remaining lesson, that is lesson number 6 and lesson number 10. And yes, that's all for this video.